The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The way a crow, कवि यहाँ यह बताते हैं कि एक साधारण कौवा से अक्सर अशुभ या नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, उनकी कहानी का हिस्सा है. The poet here explains how a common crow, often considered a symbol of misfortune or negativity, is part of his story. Shook down on me. The crow was sitting on the branches of the hemlock tree and shook off the light snow and dropped it on the poet. कौवा हेमलॉक पेड़ की शाखाओं पर बैठा था और उसने हल्की बर्फ को हिलाकर कवि के ऊपर गिरा दिया. द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो का मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से है. यह प्राकृतिक घटना साधारण थी, लेकिन इसके गहरे अर्थ थे. डस्ट ऑफ स्नो refers to small pieces of snow. This natural phenomenon was simple, but it had deep meaning. From a hemlock tree. हेमलॉक पेड़ आमतौर पर उदासी और मौत का प्रतीक होता है. हालांकि कवि ने इस पेड़ के माध्यम से कुछ सकारात्मक अनुभव किया. The hemlock tree is usually a symbol of sadness and death. However, the poet experienced something positive through this tree. Has given my heart. इस घटना ने कवि के दिल को खुशी और शांति का अनुभव दिया. This incident gave the poet a feeling of happiness and peace. A change of mood. कवि पहले उदास और निराश महसूस कर रहे थे, लेकिन यह घटना उनके मूड को बदल देती है. The poet was feeling sad and dejected before, but this incident changes his mood and saved some part. इस घटना ने उनके दिन के उस हिस्से को बचा लिया जो उदासी में बीत रहा था. This incident saved that part of his day which was passing in sadness. Of a day I had rued. कवि पहले उस दिन को लेकर पछता रहे थे, लेकिन इस छोटी सी घटना ने उन्हें उस दिन को सराहने का नजरिया दिया. The poet was earlier regretting that day. This small incident gave him the perspective to appreciate the day. Message of the poem. This poem teaches us that even small events in life can change our mood and attitude. We should try to see something positive in nature even when we feel sad or depressed. Word meaning of the poem. The way, जिस तरह, refers to the manner or method in which something happens. Crow, कौवा, often considered a symbol of bad luck or negativity. Shook down, गिरा दिया, caused something to fall by shaking. Dust of snow, बर्फ के कण, small particles or tiny flakes of snow. Hemlock tree, hemlock का पेड़, a poisonous tree often associated with sadness or death. Given my heart, मेरे दिल को दिया. Inspired or influenced. The rude, पछतावा किया, felt regret or sorrow over something. Detailed summary of Dust of Snow by Robert Frost. The poem Dust of Snow by Robert Frost beautifully captures how a simple act of nature can bring about a significant change in someone's mood and perspective. The poet was having a bad day, full of regret and sorrow. He describes a moment when a crow, sitting on a hemlock tree, shook some snow dust onto him. The crow and the hemlock tree are traditionally symbols of negativity and sadness. However, in this instance, they create a moment of beauty and transformation. The falling snow uplifts the poet's spirit and changes his mood from despair to joy. Through this poem, Frost highlights that even small events in nature, like snowflakes falling, can bring positivity and make us appreciate life. The message is to look for hope and beauty in unexpected places and to not let negativity dominate our thoughts. 1. What is a dust of snow? A dust of snow refers to small particles or tiny flakes of snow that fall from a tree. Dust of snow का मतलब बर्फ के छोटे छोटे कण या टुकड़े हैं, जो पेड़ से नीचे गिरते हैं. 2. What does the poet say has changed his mood? Answer. The poet says that the falling of the dust of snow from the hemlock tree, caused by the movement of a crow, has changed his mood. कवि कहते हैं कि हेमलॉक पेड़ से बर्फ के कणों का गिरना, जो कौए की हलचल के कारण हुआ, ने उनके मूड को बदल दिया. 3. How has the poet's mood changed? Answer. The poet's mood changed from sadness and regret to happiness and appreciation for life. This small incident helped him feel more positive and saved a part of his day. कवि का मूड उदासी और पछतावे से बदलकर खुशी और जीवन की सराहना में बदल गया.
इस छोटी सी घटना ने उन्हें सकारात्मक महसूस कराया और उनके दिन का एक हिस्सा बचा लिया। हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? The following questions may help you to think of an answer. 1. What are the birds that are usually named in poems? दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आंसर: Birds like nightingales, swans, and doves are often mentioned in poems due to their association with beauty, grace, and peace. कविताओं में अक्सर बुलबुल, हंस और कबूतर का जिक्र होता है, क्योंकि वे सुंदरता, शांति और कृपा के प्रतीक माने जाते हैं। 2. Do you think crow is often mentioned in poems? Answer: No. Crows are not often mentioned in poems because they are usually associated with negativity, death, और bad luck. नहीं, कविताओं में कौए का जिक्र अक्सर नहीं होता क्योंकि यह आमतौर पर नकारात्मकता, मृत्यु या दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। 3. What images come to your mind when you think of a crow? Answer: When thinking of a crow, images of darkness, mystery, or even mischief come to mind. It is often seen as a symbol of bad luck or ominous events. जब हम कौए के बारे में सोचते हैं, तो अंधकार, रहस्य या शरारत की छवियां दिमाग में आती हैं। इसे अक्सर अशुभता या बुरी घटनाओं का प्रतीक माना जाता है। What is a hemlock tree? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple, or an oak, or a pine? Answer: A hemlock tree is a poisonous tree often associated with sadness or negativity. The poet chooses it instead of a beautiful tree like maple or oak to show that even unpleasant or negative symbols can bring positive change. This choice highlights that beauty and inspiration can come from unexpected places. Hemlock एक जहरीला पेड़ है, जिसे उदासी और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। कवि इसे सुंदर पेड़ों जैसे मेपल या ओक के बजाय इसलिए चुनते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि नकारात्मक प्रतीक भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह संदेश देता है कि प्रेरणा अप्रत्याशित जगहों से भी मिल सकती है। What do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? Answer: The crow and hemlock symbolize sorrow and negativity. Crows are considered ominous, and the hemlock tree represents despair. However, the dust of snow represents hope, positivity, and the power of small moments to uplift our mood. It shows that even negative symbols can lead to unexpected joy and a change in perspective. कौ और हेमलॉक पेड़ दुख और नकारात्मकता के प्रतीक हैं। कौ अशुभ माना जाता है और हेमलॉक पेड़ निराशा का प्रतीक है। लेकिन बर्फ की धूल, आशा, सकारात्मकता और छोटी-छोटी घटनाओं की शक्ति का प्रतीक है, जो हमारे मूड को बदल सकती हैं। दर्शाता है कि नकारात्मक प्रतीक भी अप्रत्याशित खुशी और नजरिए में बदलाव ला सकते हैं।